Good afternoon, everybody. I hope you can hear me. Good afternoon. Good afternoon. What was the last topic that we have covered? I think we have seen the structure of ovule. I think that was the last topic, or you can confirm me what was the last topic that we have done last class. Anybody? Anybody? What was the last topic? Have we started megasporogenesis? Megasporogenesis we have started. We need to start it, or we have completed megasporogenesis. Have we done monosporic development? We need to start megasporogenesis. All right. All right. So we'll be starting from megasporogenesis. Is the screen visible to everyone? Can you people see the screen?
Yes. All right. So it previously we have done microsporogenesis. ठीक है, हमने देखा microspore tetrad बना. There was formation of microspore tetrads, and from that you have pollen grain. ठीक है, from that there will be the formation of pollen grain. Now similarly we need to see how megasporogenesis take place. That means how your megaspores will be formed. ठीक है, megaspores are for female for your female reproductive part, right? So how megaspores will be formed, and after the formation of megaspore we will see the formation of embryo sac. Okay, we'll see the formation of embryo sac. We have not completed megasporogenesis. We have not done embryo sac in the last class. Have we not done embryo sac in the last class? Anybody? Have we not done embryo sac in the last class? Pollination start करना है. I think we have completed megasporogenesis. We have seen embryo sac, and we need to start from pollination, right? है ना? We need to start pollination, everybody. Am I right? Correct, correct. That was I was thinking कि we have done megasporogenesis and embryo sac. All right. So we'll be starting pollination. Thank you, Pragati. Chalo. So we'll be doing pollination. We have completed the male and female reproductive part. Okay, I hope everything is clear from that. If you have any doubts, you can write in the chat box. Okay, if you have any doubts from that topic, you can write in the chat box. Okay, so we'll be starting from pollination. Now if I define pollination, what is pollination? See, we know that both the male and female gamete, okay, we have male gamete and we have female gamete. Okay, we know both the gametes, they are sessile. They cannot move from one place to another, है ना? We want the fusion of male and female gamete. Okay, we want them to get fused, but they cannot move from one position to another position by their own, right? Neither pollen grain nor the female gamete. Okay, they cannot move. So there should be a process by which you make this happen. ठीक है, you either you move the male gamete or you move the female gamete so that they come in contact with each other and they get fused. ठीक है, हमें पता है मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मूव नहीं कर सकते, तो आपको देयर शुड बी अ प्रोसेस कि जिसकी वजह जिससे दोनों मूव करे एंड दे आर एबल टू फ्यूज टुगेदर और एक दूसरे से फ्यूज कर ले. तो पॉलिनेशन क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ मूवमेंट और इट इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grains. ठीक है, pollination is transfer of pollen grain from male gamete, transfer of pollen grain from anther to the stigma. ठीक है, the transfer of pollen grain from the anther to the stigma, this is called pollination. ठीक है, now we have two types of pollination. ठीक है, you are transferring pollen grain from the anther to the stigma. ठीक है, so now this could be of two types. ठीक है, pollination could be of two types. Now let us see the type of pollination. ठीक है, if you see the type of pollination, it could be generally it is of two types. One is self pollination and the other is cross pollination. ठीक है, one is self pollination, another is cross pollination. Now what is the difference between self pollination and cross pollination? ठीक है, तो पहले तो pollination क्या है? जब आप pollen grain को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हो, उस प्रोसेस को pollination कहते हैं. Pollination दो तरीके का है, self pollination and cross pollination. Now what is the difference between self pollination and cross pollination is, in self pollination the transfer of pollen grains, ठीक है, in self pollination the transfer of pollen grains will happen within the same plant. ठीक है, so here transfer of pollen grains
यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का वो सेम प्लांट के अंदर होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर विद इन सेम प्लांट, ठीक है। देयर विल बी सेम प्लांट इन्वॉल्व। लेकिन व्हाट हैपेंस इन क्रॉस पॉलिनेशन? In cross pollination, the transfer of pollen grains, occur between टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। इसमें दो अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा यहाँ पे दो अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है वो विद इन द सेम प्लांट हो रहा है, दैट इज बाय सेल्फ पॉलिनेशन। सो द मेजर डिफरेंसेस इन सेल्फ पॉलिनेशन, it occurs within the same plant. In cross pollination, it occurs between two different plants. I hope it is being clear to everybody. Transfer pollination, very good. ठीक है, right. Any doubts you have, you can write in the chat box. I'll keep on checking, right? कोई भी doubt होगा chat box में लिख दो, मैं उसे देखती रहूंगी. Now in self pollination also we have two types, ठीक है। In self pollination also we have two types. One is autogamy and one is geitonogamy. ठीक है, one is autogamy and other is geitonogamy. And for cross pollination you have xenogamy. ठीक है, here you have xenogamy. So you have autogamy, geitonogamy and xenogamy. Now let us see what is the difference. See, for autogamy, what happened in autogamy? Pollination occurs within the same flowers. ठीक है, here we have written within the same plant. Now it also have two types. In autogamy, pollination occur within same flower, ठीक है। Here pollination occur within the same flower. That means in a single flower there will be both male reproductive part and the female reproductive part. So the anther, pollen grain from the anther will move to the stigma within the same flower. For example, this is your plant and here you have a flower. In this flower you have this female reproductive part and on the same flower you have the male reproductive part, okay? On the same flower you have the male reproductive part. Now what will happen? Anther from here will move to the stigma. So it is happening in the same flower, okay? It is happening in the same flower, within same flower, okay? So agar transfer of pollen grain same flower ke andar hota hai, then it is called autogamy, okay? So here you require bisexual flowers. ठीक है, here we require bisexual flowers. I hope it is clear. ठीक है, now what happen in geitonogamy? We know that there should be same plant, कि plant तो same होना चाहिए, ठीक है। So what will be the difference? So there will be pollination between different flower but same plant, ठीक है। Pollination between different flower, ठीक है। Flowers are different. Here your flowers are different but on same plant, but plant will be same. ठीक है, earlier you have seen that pollination is occurring between same flowers, but here the flowers will be different but plant will be same, ठीक है। So geitonogamy में क्या होता है? Same plant पे दो different flowers के बीच में pollination होगा, ठीक है। So let us see wire diagram. This is one flower, this is another flower. Suppose this is the female reproductive part and here you have male reproductive part, which is stamen. ठीक है, now transfer of pollen grain from this flower will happen to the another flower, ठीक है। So you have different flowers, ठीक है, flowers are different but they are present on the same plant, ठीक है। So these two are the type of self pollination where same plants are involved, ठीक है। Here same plants are involved, right? I hope this is clear. Autogamy and geitonogamy, yes ma'am, right, clearly, all right. ठीक है, तो ये आपका हो गया autogamy और geitonogamy. Now what happen in xenogamy is pollination occurs between flowers present on different plants, ठीक है। Now here plants are also different. So xenogamy में क्या होगा? Plants भी अलग होंगे and of course flowers भी अलग होंगे, ठीक है। So दोनों flower present होंगे आपके दो अलग अलग plants में, ठीक है। So pollination between flowers present on different plant, ठीक है। Here plants are different. So you have two plant A, plant B, ठीक है। Suppose
this is your male flower. Male flower like this. It will have anther, and here you have a female flower. Okay, so transfer of pollen grain will take place like this between two different plants. ठीक है, तो यहाँ पे आपके plants अलग होंगे. एक plant पे हो सकता है male flower हो, दूसरे plant पे female flower हो, उनके बीच में pollination होगा. Then that is xenogamy. ठीक है, I hope these three are clear. Now we need to understand something more deeply in this. First of all, let's talk about autogamy. ठीक है, autogamy was pollination within the same flower. ठीक है, autogamy क्या था? जिसमें आपका pollination same flower के अंदर हो रहा था. Now, what do you need to achieve autogamy? ठीक है, what all characteristics should a flower have? What all characteristics should a plant have so that they can achieve autogamy? मतलब अगर आपको ऑटोगेमी कराना है तो प्लांट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ठीक है, सो वी वांट पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर. ठीक है, हमें सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन चाहिए. सो व्हाट डू वी वांट? It cannot happen in normal flowers or normal plant. ठीक है, if there is a normal plant, normal means open flowers. ठीक है, जिसमें flowers open होते हैं. ठीक है, normal plant means which have open flowers. In that, autogamy is rare. Why? Because there are chances that pollen grain from this anther could go to some other flower. ठीक है, it could go to some other plant. There are chances. Now, if you want to make sure that autogamy happens, then what do we need? We need closed flowers. ठीक है, what do we need? We need closed flowers. Closed flowers are required. ठीक है, so in this case we require closed flowers. What happened with the closed flowers? This anther and this stigma, they lie very close to each other. ठीक है, so that anther and stigma lie close to each other. ठीक है, so you want closed flowers, not open flowers, to make sure autogamy happens. ठीक है, one thing is this. Second, there should be synchrony. ठीक है, second thing is there should be synchrony between timing of pollen release. There should be synchrony between the timing of pollen release and stigma receptivity. What does this mean is, see, you want pollination in the same flower. ठीक है, if you want pollination in the same flower, you want that anther and stigma, ठीक है, anther and stigma both get mature at the same time. This is called synchrony. If they both get mature at the same time, that means the time at which pollen releases, ठीक है, and stigma become mature, stigma become receptive, it should be it should be same. ठीक है, the timing should be same. Otherwise, what will happen? Suppose if anthers become mature, they release the pollen grain, but your stigma is not receptive. ठीक है, your stigma is not mature, so pollination cannot take place. So if you want pollination within the same flower, both your pollen release and your stigma become receptive at the same time. ठीक है, they should be receptive at the same time. ठीक है, so अगर आप चाहते हो कि ऑटोगेमी हो, मतलब सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो, तो हमें क्या चाहिए? पहले तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो क्लोज होने चाहिए. ठीक है, फ्लावर्स के अगर पेटल्स क्लोज होंगे तो जो आपका स्टिग्मा और जो एंथर है वो एक दूसरे के पास पास रहेंगे और ऑटोगेमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा, पॉलन ग्रेन कब रिलीज हो रहा है और स्टिग्मा कब रिसेप्टिव हो रहा है, स्टिग्मा कब एक्टिव हो रहा है, वो दोनों का टाइमिंग सेम रहना चाहिए. दोनों के टाइम में सिंक्रनी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि पॉलन पहले रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ, या स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, पॉलन रिलीज नहीं हो रहा. ऐसा ना हो, दोनों के टाइमिंग्स जो है वो सेम रहे. ठीक है, सो दिस वी नीड फॉर अचीविंग द ऑटोगेमी. ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंडीशन वी नीड टू अचीव ऑटोगेमी. नाउ for the closed flowers, like in, so there are some example of plants in which closed flowers are present. ठीक है, so we have Viola given in your NCERT. ठीक है, Viola, Oxalis, Commelina. ठीक है, these three are the plants in which you can find both type of flowers, open flowers and closed flowers. ठीक है, closed flowers are also called Clistogamous. ठीक है,
They are also called clistogamous flowers. ठीक है, so these type of flowers you need to carry out autogamy. Clear? And also one more thing, that you should have a bisexual flowers. Okay, only you have a bisexual flower, then only autogamy will be possible. If you have unisexual flowers, then autogamy will not be possible, है ना? अगर bisexual flowers होंगे तो ही autogamy होगा, unisexual होते हैं तो autogamy होने के chances नहीं है. ठीक है, so these are the things that we need for the autogamy. I hope this is clear. Anybody, do you have any doubts? Autogamy समझ में आया? Have you understood autogamy? Okay, so do we need any pollinating agent for autogamy? Do we need any pollinating agent for autogamy? क्या कोई pollinating agent चाहिए autogamy के लिए? Do we require wind for autogamy? See, wind could work, but otherwise we have, if you have a closed flowers, okay, if you have a closed flowers whose petals are not open, okay, so eventually when pollen grain will fall, okay, when it get mature and it will fall, so eventually it will land on the stigma because flowers are not open, है ना, flowers are closed. So if even if there is no pollinating agent, okay, then also autogamy could happen. Okay, if there is no pollinating agent, then also autogamy could take place. रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकता है क्या? स्टार्टिंग का पार्ट छूट गया था. हाँ, यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियो इन योर ग्रुप्स. यू कुड राइट अ मैसेज इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में मैसेज डाल देना, अदरवाइज वो आपको भेजते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस. ठीक है, ओके. चलो, moving forward. So this is your autogamy. Now let us move forward with Geitonogamy. Now what happens in Geitonogamy is we require two different flowers. ठीक है, Geitonogamy में दो different flowers चाहिए थे, but present on same plant. ठीक है, so this type of plant is called monoecious plant. This type of plant is called monoecious plant. Monoecious plant means plant having male and female flowers. ठीक है, if a plant have both type of flowers, then that plant is called monoecious plant. ठीक है, ये इस तरह के प्लांट को monoecious plant कहते हैं, जिसमें मेल फ्लावर्स भी होते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं. ठीक है, so what is special about Geitonogamy is, see, Geitonogamy, if you see functionally, please mute yourself. All right, so if you see functionally, it is similar to, ठीक है, functionally it is similar to cross pollination. I'll explain. Functionally it is similar to cross pollination, but genetically if you see, it is similar to autogamy. See what happened in Geitonogamy and autogamy, in both of them a single plant is involved. Okay, only one plant is involved, so the seeds that are formed will be genetically similar to parent plant. ठीक है, autogamy और Geitonogamy दोनों में ही same plant involve हो रहा है, तो जब भी सीड बनेगा वो अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज जेनेटिकली similar to autogamy because same plant is involved, same genes are involved. ठीक है, but functionally it is similar to cross pollination. Why? Because it require
pollinating agent, ठीक है, because it require pollinating agent which is also required in cross pollination, ठीक है, like we require pollinating agent in cross pollination, similarly a pollinating agent will be required in jejunogamy, ठीक है. हम functionally उसे cross pollination जैसा क्यों बोल रहे हैं, because दोनों में ही pollinating agent की जरूरत है. और genetically autogamy जैसा क्यों बोल रहे हैं, because दोनों के अंदर सेम प्लांट इन्वॉल्व होता है, सेम जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. सो दैट इज वाई फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन, genetically it is similar to autogamy. I hope this point is clear. This is about jejunogamy, ठीक है. I hope this is clear. Anybody, if you have any doubts, किसी कोई डाउट है यहाँ तक? You can note it down if anything is left. I'm showing you the screen. You want to note something, please note it down. Then I'll move to xenogamy. Okay, out of these three, anybody could tell me, out of these three, in which type of pollination you will get genetically different plant, ठीक है. In which type of pollination you will get genetically dissimilar, genetically different plant. इन तीनों में से genetically different plant किस में मिलेगा? In which of them you will get genetically different plant? Jejunogamy or xenogamy? Genetically different plant you will get if there is different plant involved, ठीक है. If two different plants are involved, then only you will get genetically different seeds. So that would be xenogamy, ठीक है. In xenogamy only you will get genetically different plants, ठीक है. Because here two different plants are involved, है ना. Two different genes are involved. यहाँ पे दो अलग अलग plant, दो अलग अलग gene involve हुए हैं. That is why. So next is your xenogamy. Here what happened? Two different plants are involved, ठीक है. So it brings genetic variation, ठीक है. Only xenogamy brings genetic variation. It brings genetic variation. Why it brings genetic variation? Because two different plants are involved, two different genes are involved, okay. So that is why it brings genetic variation. I hope this is clear. And this type of plant where the plant only have either male reproductive flowers or female reproductive flowers, okay, not both of them. If a plant only have either male reproductive flowers और मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स, ठीक है. या तो उसपे मेल फ्लावर्स है या तो उसपे फीमेल फ्लावर्स है, ओनली वन टाइप. दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड, व्हाट डू वी कॉल दीज टाइप ऑफ प्लांट्स? If they have only one type of flowers, either male or female, these type of plants are called, generally they are of same species, ठीक है. Generally they are of same species because see what happens after the pollen grains are deposited. जैसे ही pollen grain deposit हो जाता है, अब स्टिग्मा पे डिपेंड करता है कि वो pollen grain को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ठीक है. तो जनरली सेम स्पीशीज के होते हैं, बट कभी कभी अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है तो उसका भी हो जाता है. यूनिसेक्सुअल और डायशियस प्लांट, ठीक है, हम उसको यूनिसेक्सुअल या फिर डायशियस प्लांट्स भी बोलेंगे, ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायशियस और यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है. दैट हैव ईदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स. जिन पे या तो मेल फ्लावर्स है या फीमेल फ्लावर्स है, तो वो क्या होते हैं? डायशियस या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. Now we'll be studying the pollinating agents. I hope everything is clear from here.
नाउ विल बी स्टडिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हिंदी में थोड़ा बताओ ना। ओके, एक बार मैं दोबारा से हिंदी में रिपीट कर देती हूँ पॉलिनेशन वाला, तो पीछे नहीं आता। ठीक है, एक बार हिंदी में रिपीट कर देते हैं। ऑटोगेमी हमने देख लिया, जिसमें सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, मतलब एक ही फ्लावर का एंथर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे, तो सेम फ्लावर के अंदर होगा। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है? एक तो फ्लावर्स क्लोज होने चाहिए, मतलब बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर खुले होंगे तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टिग्मा और एंथर आप पास पास रहते हैं। सिंक्रनी होनी चाहिए, मतलब जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो जाए। ठीक है, दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक पहले मैच्योर हो रहा है एक बाद में मैच्योर हो रहा है, तो स्टिग्मा और एंथर दोनों साथ में मैच्योर हो। ठीक है, क्लोज फ्लावर्स के हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जिसको हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में दो अलग अलग फ्लावर्स पर सेम प्लांट में, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर्स पे होता है लेकिन वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम मोनेशियस प्लांट भी कहते हैं। अब जिटोनोगेमी जो है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है। क्यों? बिकॉज दोनों में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी चाहिए और जिटोनोगेमी में भी चाहिए। लेकिन जेनेटिकली अगर आप देखोगे तो वो ऑटोगेमी जैसा होता है। क्यों? बिकॉज ऑटोगेमी में भी और जिटोनोगेमी में भी दोनों में ही जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट सेम यूज हुआ है। जब तक आप प्लांट अलग अलग नहीं यूज करते तो आपका जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। दोनों में प्लांट सेम यूज हुआ है, इसलिए दोनों जेनेटिकली क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। लास्ट आपका जीनोगेमी है, जिसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आपका पॉलन ग्रेन जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसी से आपका जेनेटिक वेरिएशन आता है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। ये आपकी 3 टाइप की पॉलिनेशन हो गई। बताओ, समझ आया? बिल्कुल होगी। जीनोगेमी रिक्वायर्स एजेंट, है ना? जीनोगेमी में तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना है, तो वहां तो पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए ही चाहिए। सिर्फ ऑटोगेमी में नहीं होगा तो चलेगा, अदरवाइज इन जिटोनोगेमी एंड इन जीनोगेमी दोनों में ही आपको एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, चलो पॉलिनेटिंग एजेंट देख लेते हैं। ऑलराइट, now let us see pollinating agent. Pollinating agent are the agents that help in carry out the pollination. ठीक है, ये वो एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। एजेंट्स that help in carrying out pollination. ठीक है, now agents could be of two type. You could have biotic agent, दो तरह के एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट और abiotic agent. ठीक है, so you could have biotic agent and you can have abiotic agent. Biotic agent means which are living, so you have animals, insects. ठीक है, abiotic agent you have two types, water and wind. ठीक है, in abiotic we have two types, water and wind. And which is more common? What do you think? Which agent is more common, abiotic or biotic? Which agent is more common? Which agent is more common, बायोटिक और एबायोटिक? कौन सा एजेंट ज्यादा कॉमन है, बायोटिक या फिर एबायोटिक? अदर्स, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा एजेंट ज्यादा कॉमन है? विच एजेंट इज मोर कॉमन फॉर पॉलिनेशन? इट इज बायोटिक एजेंट। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स आर मोर कॉमन, नॉट एबायोटिक। ठीक है, सो बायोटिक एजेंट्स आर मोर कॉमन, and in biotic agent also bees are very common. ठीक है, honey bees are most common. ठीक है, and in abiotic agent if you see the abiotic agent, then wind is more common.
अगर एबायोटिक देखोगे तो विंड कॉमन है, दोनों में से अगर कंपेयर करें तो बायोटिक एजेंट ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एबायोटिक एजेंट्स, हम एबायोटिक एजेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम विंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट से स्टार्ट करेंगे। इन दैट वी हैव विंड, ठीक है, wind as abiotic agent. So in abiotic agent wind are more common, and special if your pollination is occurring through wind, ठीक है, that type of pollination is called anemophily, ठीक है। wind से pollination होता है तो हम उसको anemophily भी कहते हैं, ठीक है। so mostly in grasses, ठीक है, grasses में होता है। Okay, now if the plant is pollinated by wind, so what special characteristics that plant should have, ठीक है। अगर pollination wind से हो रहा है तो उसमें क्या क्या special characteristics होनी चाहिए। Characteristics of plant pollinated by wind, ठीक है। अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले वी टॉक अबाउट पॉलन ग्रेन्स, व्हाट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन शुड इट हैव, बिकॉज इट इज कैरिड अलोंग बाय द विंड, है ना, इट इज कैरिड अलोंग बाय द विंड, सो दे शुड बी लाइट इन वेट, ठीक है, दे शुड बी लाइट इन वेट, हैवी नहीं होने चाहिए, लाइट वेट के होने चाहिए, एंड दे शुड बी नॉन स्टिकी, सो दैट दे कैन इजीली बी कैरिड अवे बाय द विंड, ठीक है, इजिली हवा उनको ले जाए, तो वो लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। दिस इज अबाउट पॉलन ग्रेन, ठीक है। एंड अबाउट स्टेमेंस, स्टेमन शुड बी वेल एक्सपोज, ठीक है, वेल एक्सपोज होने चाहिए, दे शुड बी वेल एक्सपोज सो दैट विंड कुड इजिली टेक द पॉलन ग्रेन, ठीक है, दे शुड बी वेल एक्सपोज सो दैट विंड कुड इजिली टेक द पॉलन ग्रेन, ठीक है, दे शुड बी वेल एक्सपोज, ठीक है, फॉर इजी डिस्पर्जल, ताकि पॉलन ग्रेन इजिली चले जाएं, फॉर इजी डिस्पर्जल ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इजी डिस्पर्जल ऑफ पॉलन ग्रेन। This is about stamen, ठीक है। Now if we talk about stigma, stigma needs to catch the pollen grain, है ना, अब stigma को क्या करना है, pollen grain को catch करना है, तो what type of stigma should they have, they have large stigma, large, they have feathery stigma, why feathery, so that easily they can trap the pollen grain, feathery to trap the pollen grain, so easily it can trap the pollen grain, feathery stigma to easily trap the pollen grains, ठीक है। and wind pollinated flowers, ठीक है, the anemophilous flowers,
they have single ovule. Very important. These flowers have single ovule. They always have single ovule in ovary. ठीक है? A ovary could contain multiple ovules, but especially those plants which are pollinated by wind, they have single ovule in the ovary. ठीक है? जो plants आपके wind pollinated होते हैं, उनमें generally उनकी ovary के अंदर single ovule present होता है. ठीक है? हाँ. All right, so they have single ovule in their ovary, and many flowers are packed in inflorescence. Okay, usually they do not have single flowers. Generally, what happens? Five to six or bundle of flowers are packed together in inflorescence, so that they increase the chances of trapping the pollen grain. Okay, so many flowers, बहुत सारे flowers एक साथ packed रहते हैं, are packed in inflorescence. ठीक है, many flowers are packed in inflorescence, right? So this is about the flowers or the plant which get pollinated by wind. So ये सब properties होती है उन plants की जो wind pollinated होते हैं. उनका pollen grain light weight का होता है, non sticky होता है, stamen अच्छे से exposed रहती है ताकि easily pollen grain का dispersal हो जाए. Stigma large होती है, बड़ी होती है, feathery होती है. क्यों feathery? ताकि इजिली ट्रैप कर ले पॉलन ग्रेन्स को. ठीक है, और इनके फ्लावर्स में ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ पैक्ड रहते हैं. एग्जाम्पल, इफ यू सी द एग्जाम्पल, ठीक है, इफ यू सी द एग्जाम्पल, देन देयर इज कॉर्नकॉब. द डायग्राम ऑफ कॉर्नकॉब इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. ठीक है, इन कॉर्नकॉब यू कैन सी दिस इज कॉर्नकॉब and you can see tassels like this. This is corncob and these are the tassels. ठीक है, these tassels are nothing. These tassels are style and stigma which are floating in air. ठीक है, they are floating in wind so that they can trap the pollen grains. ठीक है, so these tassels are style and stigma. So you have corncob and you have grasses. ठीक है, so these are the flowers that get pollinated by wind. So ये आपका है wind pollination. I hope this is clear. Hydrophily. Hydrophily are the plants which get pollinated by water. Any doubts? ये clear हुआ सबको? Anemophily is clear. All right. So you can note it down. If something is left, then we'll be starting water pollination. That is hydrophily. Okay, now let us do hydrophily.
Hydrophily is water pollinated plants. Water pollination. Water pollination is rare. ठीक है, usually wind pollination is more common. Water pollination आपका थोड़ा कम होता है, rare होता है as compared to wind pollination. ठीक है, so it is quite rare. Restricted to lower plants. ठीक है, it is restricted to basically 30 genera. There are total 30 genus, so they are restricted to 30 genus, and those are mostly monocots. ठीक है, and those are mostly monocots. Only 30 genera, 30 genus are there. 30 genus में होता है, और वो सारे के सारे मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं. ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो अकर इन फाउंड इन लोअर प्लांट्स. लोअर प्लांट्स में मिलते हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, pteridophytes. Why? Because we know they are present near the water body, है ना. These type of plants they are present near the water body, क्योंकि ये water body के पास मिलते हैं, तो इनके अंदर water pollination थोड़ा सा common होता है. ठीक है, right? And we also know that their distribution is limited, है ना. Bryophytes and pteridophytes, their distribution is very limited, so that is why water pollination is rare. ठीक है, and that is why their water pollination is rare. Now if you see some examples given in NCERT for water pollinated plants in fresh water, you have Vallisneria and you have Hydrilla. ठीक है, you have Vallisneria and Hydrilla for fresh water. And if you see marine water, ठीक है, in marine water you have Zostera, sea grasses. Zostera, sea grasses. ठीक है, this is for marine water. Now all aquatic plant do not show water pollination. ठीक है, if a plant is aquatic that does not mean कि वो water pollination करेगा. ठीक है, अगर वो plant aquatic है, पानी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें water pollination होगा. ठीक है, so there are different type of aquatic plants. ठीक है, we have different type of aquatic plants, so there are 3 categories. ठीक है, there are basically 3 categories. The first category, this is aquatic plant. ठीक है, aquatic plant, but the flower has come above the level of water. ठीक है, the flower has come above the level of water. So what happened in aquatic plant? Plant are aquatic, but flower has emerged out of water level. पानी से बाहर आ गया है, out of water level. ठीक है, for example, this is your water, this is the plant. So flower has come out of the water level. ठीक है, flower has come out of water level. So do you think here water pollination will take place? क्या यहाँ पे water pollination होगा? Do you think water pollination will take place here? Everybody, do you think water pollination will take place in this case? अभी ये बताओ, जिसमें फ्लावर वाटर सरफेस के बाहर आ गया है, क्या वहां पे वाटर पॉलिनेशन होगा? Will there be water pollination here if the flower has come out of the water surface? If it is above the water surface, will water pollination will take place here? हो सकता है. कैसे हो सकता है? If flower is present outside above the level of water, how water will be able to transfer the pollen grain to the stigma? How water will be able to transfer the pollen grain to the stigma? See, if pollen grain is present here, how water will transfer it to the stigma? Water will not be able to transfer it, right? अगर pollen grain water surface पे present है, तो क्या water इतनी ऊपर तक पहुंचा पाएगा क्या pollen grain को? नहीं. So here pollination does not occur by water. ठीक है, so here pollination occur by wind. There could be insects,
ठीक है. So insects and wind. So here pollination occur through wind and insects and not by water. They are aquatic plants, but pollination does not occur through water. Why? Because flowers have emerges outside the level of water, above the surface of water. ठीक है. So here you have two examples: water hyacinth and water lily. In water hyacinth and water lily, though they are aquatic plants, still there is no water pollination. दोनों aquatic plants हैं, but वहां पे water pollination नहीं होगा. ठीक है. So note it down. So in this we have three cases. एक case हमने कर लिया है. We are left with two more cases. You note it down. I hope this is clear. Okay, so this is the one type of aquatic plants. We have two more types. There we need to see whether pollination occurs through water or something else. In other type, what happens? The plant have come, the female flower has reached to the surface of water. ठीक है. This type is also called epihydrophily. ठीक है. This is also called epihydrophily. What happens in epihydrophily? Female flowers have reached to surface of water. ठीक है. Here female flowers have reached to the surface of water, not above the surface of water. Water के surface के ऊपर नहीं है, surface of water पे हैं. ठीक है. On the surface of water. So here the female flowers have reached to the surface of water by their long stalk. By long stalk. ठीक है. तो वो surface तक आ गए. Female flowers आपके surface पे आ गए हैं. And male flower will release pollen. Male flowers will release pollen grain on water surface. ठीक है. Male flower will release their pollen grain on water surface, and this pollen grain will move. This pollen grain will move passively with water currents. ठीक है. Now pollen grain will move ahead passively with water currents. जैसे जैसे water current move करेंगे, pollen grain भी move करेगा. ठीक है. So here water is used for the pollination. ठीक है. So here water is used for the pollination. Like see, this is the water and this is your female flower on the surface of water. ठीक है. And pollen grains are released here. So they will move by the water and reach the stigma. ठीक है. So here pollination occur by water. This is pollination by water. ठीक है. Here pollination is occurring by water. तो यहाँ पे क्या है? फीमेल फ्लावर सरफेस पे है पानी के, pollen grain भी सरफेस पे रिलीज हो जाएंगे, तो पानी से ही pollination होगा. ठीक है. The example for this is Vallisneria. Examples are very important. Examples for this is Vallisneria. I hope this is clear. Please see
I hope this is clear. Here the female flower is present on the surface of water, not above the level of water. फ्लावर का लेंथ अगर छोटा है तो वो भी हम पढ़ेंगे ना, हम 3 केसेस पढ़ेंगे, 2 हमने पढ़ लिया, तीसरा देखेंगे। क्या लिखा है? मार्केंशिया। मार्केंशिया इज CH, वही मार्केंटिया पूछ लो ना, MARCHANTIA। हाँ, अगर वही है सो मार्केट, हाँ, तो फिर उसमें वाटर से होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो एक बारी। Then we'll see the third case of water pollination. In third case, we will have flowers which are submerged in water. Okay? In third case, we have flowers which will be submerged in water. What do you think if plants are submerged in water? Then pollination would be through which agent? If flowers are submerged in water, then pollination will be through which agent? अगर फ्लावर सबमर्ज होगा पानी में तो पॉलिनेशन कैसे होगा? That means through water, correct? So third case will be where plants or the female flowers, the complete plant is submerged into the water. Okay, third case in which the plants are submerged into the water. This is also called hypohydrophilia. What happened in hypohydrophilia is female flowers, here your female flowers, they are submerged in water. Submerged in water. Pollen grains are also released inside the water. Okay? Pollen grains are released inside water. Okay? Pollen grains are also released inside the water. Okay? Pollen grains will be released inside the water and they will move through the water to the female flower. Okay? They will move through the water to the female flower. Now, pollen grains should have special characteristics if they are present inside the water. So, what type of pollen grains should we have? Okay, first of all, because they are present inside the water, so they should be a bit long. Okay, they are long and the shape is ribbon-like. They have ribbon shape. Okay, they have ribbon-like shape and they are long, and also they have a covering, they have a layer that protect them from getting wet. Okay, they have a mucilaginous, covering, a jelly-like covering to prevent wetting, ताकि वो गीला ना हो, to prevent wetting. So this type of pollen grain are found in this case. Okay, and pollen grain also move. Pollen grain will move passively. Passively means along the water currents, passively with water and reach to the stigma. ठीक है, passively water के साथ move करेगा and reach to the stigma inside the water. ठीक है, here your flowers are inside the water. Example is Zostera, that sea grass.
ठीक है, example is Zostera. So this is pollination by water. ठीक है, this is pollination by water. I hope this is clear. Please note it down, and if you have any doubt, write in the chat box. Then we'll be move forward with biotic agents. So water pollination is done. Let us move forward with biotic agents. Biotic agents. So here you have insects. Okay, there could be insects, birds, bats. So you have insects. If it is occurring through insects, it is called entomophily. If it is occurring through birds, it is called ornithophily. If it is occurring through bats, it is called चिरेप्टोफिली. ठीक है, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और चिरेप्टोफिली. ठीक है, could be any means. बायोटिक एजेंट में कुछ भी हो सकता है इनमें से. इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, and you have other animals, even large animals also. ठीक है, there could be large animals like you have primates given in your NCERT. Primates you have lemur. ठीक है, arboreal rodents हो सकते हैं. ठीक है, so you could have rodents, arboreal rodents. Arboreal means present on tree. जो tree पे रहते हैं rodents, वो हो सकते हैं. ठीक है, and there are some reptiles also like gecko lizard. Many animals are responsible, and among them most of the pollination occurred through bees. Most common is bees. सबसे ज्यादा common जो होता है pollination, that is through bees. ठीक है. Now for biotic agents, if your plant is getting pollinated through biotic agent, what should be the characteristic of a flower? ठीक है, if they are getting pollinated by biotic agent, what should be the characteristics of a plant if it is insect pollinated? अगर insect से pollination हो रहा है तो कैसे flowers होने चाहिए? What type of flower should it have? If it is insect pollinated, what type of flowers should it have? कैसे flowers होने चाहिए अगर insect pollinated है तो? Why unisexual? It can be bisexual also. Okay, it does not matter for insects कि वो unisexual है या bisexual है. It could be bisexual also. So you have well exposed, sticky pollen, attractive petals. Why attractive petals?
to attract the insects and birds. And what else do they want? What else do the insects want from the flower? Flower से उनको और क्या चाहिए? Why do they come to the flowers? So flowers पे आते ही क्यों हैं? What is the reason that they come to the flowers and help in pollination? What do they want from the flowers? Anybody? What does insects or birds they want from the flower? Juice, and that is nectar. Okay, so they should have nectar. Large colorful petals. Okay, it should have large colorful petals, should have nectar. Okay, the sweet juice to attract the insects or birds. Okay, large colorful petals hote hain. They have fragrance, nectar rich. Okay, so that is how they attract the insects. But if your plant is pollinated by flies and beetles, if they are pollinated by, ठीक है, if your flower is pollinated by flies and beetles, अगर fly या फिर beetle उसे pollinate कर रहा है, so उनके पास एक characteristic odor होता है, characteristic smell होता है to attract them, ठीक है, so they have a characteristic foul odor, थोड़ा अजीब सा smell होता है, so that is why foul odor, ठीक है. Otherwise they have fragrance, but if they are pollinated, अगर वो flies और beetle से pollinate हो रहे हैं, they have a foul odor, ठीक है. So that is how they get pollinated by your insects or birds, ठीक है. इस तरीके से आपका biotic agent जो है help करते हैं pollination. Now there is something which is called pollen rewards. Pollen rewards मतलब floral rewards. Floral rewards are the rewards which are offered by flowers to their pollinator, ठीक है. Flowers जो भी offer करते हैं pollinators को, that is called floral rewards, ठीक है. Whatever flower offers to pollinator, वो जो भी pollinator को देते हैं, that is called floral reward. For example, they give pollen, ठीक है. Any pollinator that will come, whether it is insect, it is bird, ठीक है. So flower will give them pollen grain and nectar, ठीक है. They will give them pollen grain and nectar. So pollen grain and nectar are their reward. Otherwise, there is one more thing, a special reward, that is a safe place. Flower also provide safe place to lay their eggs, ठीक है. Pollinators can also lay their eggs on the flower. So flower उनको एक special space provide करते हैं जिसमें वो अपने eggs को lay कर सकते हैं. So these are the floral rewards. I hope this is clear. कोई doubt है तो बताओ. If you have any doubts, let me know. यहाँ तक clear है? यहाँ तक कोई doubt किसी को? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? ठीक है. All right. Now, if we see the example for the safe places given in your NCERT, there is a flower, tallest flower. The name of that flower is Amorphophallus. It's the tallest flower, ठीक है. Amorphophallus जो है वो सबसे tallest flower है, 7 feet tall, 7 or 6 feet tall, ठीक है. So here the pollinators could lay their egg, ठीक है. Here the pollinators come, pollinators आते हैं अपना egg lay करते हैं. Otherwise there is a relationship between, another example, there is a relationship, very important relationship between moth, an insect, and yucca plant, ठीक है.
moth and yucca plant. Now what is the relationship? They cannot complete their life cycle, ठीक है, without each other, ठीक है, they cannot, ये अपनी life cycle एक दूसरे के बिना complete नहीं कर सकते, they cannot complete their life cycle विदाउट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज स्पेशल, सी, मोथ हेल्प्स इन पॉलिनेशन, ठीक है, मोथ विल हेल्प इन पॉलिनेशन. एंड व्हाट डज यका प्लांट डू? मोथ तो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, मोथ इज हेल्पिंग इन पॉलिनेशन. एंड हाउ यका प्लांट इज हेल्पिंग मोथ, ठीक है, एंड यका प्लांट प्रोवाइड space, ठीक है. What does yucca plant do? Yucca plant provides the space, place in locule of ovary, ठीक है, अपनी ovary में place देता है. It provide place in locule of ovary to lay egg so that the moth can lay eggs there, ठीक है. So yucca plant provides the space to the moth so that it can lay its egg. So इस तरीके से दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है. And one last thing in pollination is robbers. There could be pollen and nectar robber. Robber मतलब thieves, ठीक है. So who are pollen and nectar robbers? Suppose a pollinator comes, ठीक है, a pollinator comes and consume the pollen or nectar, ठीक है. If insect consume, ठीक है, insect has come and it consumed the nectar, ठीक है, it has consumed the nectar or pollen, but ठीक है, they have carry out sorry they have consumed the nectar, उन्होंने nectar ले लिया, pollen ले लिया, but without bringing pollination, but they are not helping in pollination, ठीक है, they should help in pollination as a result, but they are not helping in pollination, then they are called pollen or nectar robbers, कि उन्होंने nectar और pollen तो ले लिया but pollination नहीं कराया, ठीक है, they have taken the pollen, they have taken the nectar, but they are not helping in pollination, then they are called pollen and nectar robbers. That is it with the pollination. I hope everything is clear. कुछ doubt है तो बताओ. नोट डाउन कर लो, कुछ रह गया तो प्लीज नोट इट डाउन, then we'll move forward. Done, everybody? Clear? नहीं, देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो सिर्फ
मतलब जिनका पॉलिनेटर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने बताया जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो भी हर जगह से पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, और कभी कभी जैसे मॉथ है वो किसी और प्लांट पे नहीं जाता, द टाइप ऑफ नेक्टर जो उसे चाहिए, ठीक है, या जो केमिकल उसे चाहिए, जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए, वो उसे यक्का प्लांट पे मिलता होगा। तो किसी स्पीशीज में क्या होता है, उनका पॉलिनेटर फिक्स रहता है कि वो उसी से पॉलिनेट होंगे। तो मोथ जो है वो अपने एग्स को वहीं ले कर पाता है, तो वो उनकी जो स्पीशीज है वो तभी बढ़ा पाएगा जब वो यगा प्लांट पे जाके अपना एग ले करेगा। और अगर प्लांट को पॉलिनेट होना है तो उसके लिए उसको मोथ की जरूरत होती है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ आया? चलो, मूविंग फॉरवर्ड, there is a very small topic before starting fertilization, that is outbreeding devices, very important. Outbreeding means breeding outside the breed, ठीक है, breeding like where the fertilization और hybridization takes place outside the breeds, दो अलग breeds के बीच में जब हम mating कराते हैं तो उसे outbreed कहते हैं, outbreeding devices. Now why outbreeding is important? See, if regular self pollination will take place, ठीक है, if multiple times self pollination take place, then it causes a problem which is called inbreeding depression, ठीक है, multiple self pollination causes, ठीक है, अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इट कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. नाउ बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन द सर्वाइवल चांसेस ऑफ प्लांट डिक्रीजेस, ठीक है, लीड्स टू reduction in survival chance because there is no evolution, there is no variations, right? So it leads to reduction of survival. Now what do we want? We want क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, वी वांट पॉलिनेशन इन डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है, वी वांट टू डिफरेंट ब्रीड्स, दे शुड पॉलिनेट टुगेदर, ठीक है, हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना, हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है. सो व्हाट आर द डिवाइसेस, व्हाट आर द what are the changes that occur in plant, ठीक है, what are the changes that occur in plant which help in cross pollination, ऐसे क्या क्या changes plant में आए हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो हमें वो देखना है, ठीक है. वी वांट क्रॉस पॉलिनेशन, वी वांट टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट. सो देर आर सम पॉइंट्स, देर आर सम वेज by which plant has evolved, ठीक है, प्लांट ने इवॉल्व किया so that वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर सके, ठीक है, so that they can favor क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. now first is, see, if the time period of pollen release and stigma receptivity is not same, ठीक है, if the time period of pollen release and stigma receptivity will not same, then self pollination will not take place, ठीक है, as we have learned in autogamy. Autogamy हमने देखा था synchrony is required, right? So if there is no synchrony between pollen release एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे, दे आर नॉट गेटिंग मैच्योर एट सेम टाइम, pollen रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, इफ देर इज नो सिंक्रोनी, दे आर नॉट गेटिंग मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है, सो इट विल प्रिवेंट, इट विल स्टॉप ऑटोगेमी, ठीक है, इट विल स्टॉप ऑटोगेमी. But you tell me, can it stop Geitonogamy? We want to stop self pollination, ठीक है, हमें self pollination रोकना है, that means both autogamy and Geitonogamy. So by this way we can stop autogamy, but can we stop Geitonogamy also? Can from this method we can stop Geitonogamy? क्या इस मेथड से हम Geitonogamy भी रोक सकते हैं? बताओ. Can we stop Geitonogamy also from this method?
Geitonogamy means we are talking about two different flowers, है ना? We are talking about two different flowers. See here, you can stop autogamy but not geitonogamy, ठीक है? Because in geitonogamy different flowers are involved, ठीक है? Different flowers are involved and in different flower हो सकता है कि एक फ्लावर में स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाए, तो वो पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना? हो सकता है कि एक फ्लावर में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए और दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, ठीक है? दोनों फ्लावर्स में हो सकता है अलग अलग टाइम या सेम टाइमिंग पे, तो geitonogamy is possible, ठीक है? So it will help in preventing autogamy but not geitonogamy. ठीक है? So there could be two cases in non-synchrony. There could be two cases. It could be possible that pollen, ठीक है? It could be possible that your pollen is released first, ठीक है? In the flower, pollen is released first. Pollen release हो गया, but stigma is not receptive. Stigma is not receptive. This condition is called protandry. This condition is called protandry. And it could be possible that stigma is receptive. हो सकता है stigma receptive हो गया. Stigma is receptive, but pollens are not released. Are not released. ठीक है? Pollen release नहीं हुए. This is called protogynous. ठीक है? So there could be two conditions. Whether male So that is how you can stop autogamy, but you cannot stop geitonogamy from this. ठीक है? I hope this point is clear. Everybody, इस point में किसी को doubt है तो बताओ. देखो बेटा, ऑटोगैमी तो नहीं होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेम फ्लावर की. सेम फ्लावर पे अगर एक ही फ्लावर पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है ना? अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो ऑटोगैमी होता है, ठीक है? लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुए, है ना, एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुए, तो ऑटोगैमी तो नहीं होगा, ठीक है? लेकिन जिटोनोगैमी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि एक फ्लावर पे मेल पार्ट मैच्योर हो गया और दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया, तो उस वाले फ्लावर से दूसरे वाले फ्लावर में तो जा सकता है ना. जिटोनोगैमी तो पॉसिबल है, बिकॉज हो सकता है कि दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो जाए, सेम प्लांट में ही दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं सेम फ्लावर की, कि सेम फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे रिसेप्टिव हो रहे हैं. लेकिन अगर दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं और उस एक में स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, एक में पोलन ग्रेन रिसेप्टिव हो गया, तो वहां तो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना? चलो से नोट डाउन कर लो. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. अदर पॉइंट्स वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है? You have any doubt, write in the chat box, and rest we'll cover in next class. Till then, if you do not have any doubts, you can leave the class. Thank you. Good evening, everybody. See you in next class. Take care. And if you want to ask something, write in the chat box. Thank you, everybody. Take care. See you next class. क्या बायोटिक में ह्यूमन होगा?
बाय मिस्टेक इट कुड टेक प्लेस कि आपने पॉलन ग्रेन को हाथ लगाया, फिर आपने स्टिग्मा को टच कर दिया, सो बाय मिस्टेक इट कुड हैपन, बट दे आर नॉट द एजेंट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। यूजुअली ह्यूमंस नहीं होते, हो सकता है बाय चांस कि आपने पॉलिनेशन का ट्रांसफर करा दिया, ठीक है ना, बट जनरली ऐसे वो कोई एक एग्जाम्पल नहीं है फाइटिक एजेंट के। चांस इवेंट हो सकता है कि बाय चांस हो गया,